I am Ritika Bajpayee, Assistant Professor at Axis Institute of Planning and Management, Kanpur. So, in the series of business environment and legal aspect of business, in this lecture, I am going to cover technological environment. In the last, we have discussed about the political legal environment, and in this, I am going to talk about the technological environment. Okay. So, again we have this chart in which external environment is divided into the two parts, the micro environment and the macro environment, right. Okay. So, under the macro environment, micro environment we have covered all the factors we have covered, and under the macro environment today we will discuss about the technological factor. Okay. Okay. So, while studying the technological environment, first of all it is very necessary to understand that what is technology. Okay. So, J.K. Gilbert defines technology as a systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks. Okay. So, what he said that जब भी आप अपना साइंटिफिक नॉलेज और ऑर्गेनाइज नॉलेज को प्रैक्टिकल टास्क में अप्लाई करते हो, व्हेन यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल टास्क, दैट इज टेक्नोलॉजी, राइट. Technology can be defined as a method of technique of covering inputs to of converting inputs to outputs in accomplishing a specific task. So, whenever you are doing something in which you are trying to convert your input into the outputs to accomplish particular specific task, so that is what? That is technology. So, thus the term method and technique refer not only to the knowledge, but also to the skills and means of accomplishing the task. Changes in technology affect how a company will do the business. A business may have a dramatically change their business, their operating strategy as a result of change in the technological environment. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज होगा, सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज जो होता है वो हमेशा कैसे होगा, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में होगा. लाइक देयर विल ऑलवेज बी अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी. तो जैसे ही अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, बिजनेस विल अफेक्ट इट्स ऑपरेशंस, इट्स स्ट्रैटेजीज, सो दैट इट मे cope up with the changes which are going on in the technological environment. The technological innovation then refers to the increase in knowledge, the improvement in skills, the discovery of a new or improved means that extends people's ability to achieve a given task. Okay. Okay, so let us see the classification of technology. Technology can be divided into the two parts, the hard technology and soft technology. Hard technology includes the blueprints, machinery, equipment and other capital goods, and whereas the soft technology includes the management know-how, finance, marketing and the administrative techniques. So, somewhere we can conclude with the examples that hard technology is in the physical form, right. The machinery, blueprints, the equipments and the capital goods that we can see and we can touch, right, we can feel. So, all the the physical form of the technology is hard technology, and the non-physical form of the technology is soft technology, like the management strategies and the plans and the finance and the marketing techniques. We cannot see this. Okay, there is no physical existence of all these things, but it is a kind of the of something that is that is not in the physical form. That is why it is called as a soft technology. Okay, so now let us talk about the innovation. Whenever we talk about the technology, innovation comes with that, right. So, innovation is what? The process of translating an idea or invention into goods or services that creates value or for which the consumers will pay, that is innovation. To be called an innovation, an idea must be replicable at an economical cost and must satisfy a specific need. Okay. So, we need to understand that in order to call an innovation, that idea that which have been converted into the goods or the service must be have the economic cost and must satisfy a specific need, otherwise it will not be called as the innovation.
In business, innovation often results when ideas are applied by the company in order to further satisfy the needs and expectations of the customer. So, with the change in the environment, with the change in the taste and preferences of the customers, a business always need to change in its operations, in its the specifications. तो जैसे ही specification और proceedings में जो change होता है with the upgradation of the technology, with the change in the preferences and taste of the customers, so that also results to the is also the result of the innovation. Okay. Okay, so let's talk about the classification of innovation. According to the Benz, the innovation can be classified into the three categories: the radical innovation, incremental innovation and next gen tech innovation, right. So, radical innovation is what? The basic technological innovation that establishes a new functionality. When something new is introduced in the market, like which doesn't exist, कुछ भी ऐसा innovation, कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी, कुछ नया प्रोडक्ट और अ न्यू सर्विस जो कि अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, which is something new. Okay, so that comes under the radical innovation. And when we talk about the incremental innovation, so that is change in the existing technological system and doesn't alter the functionality of the original product but improve incrementally the performance, feature and the safety. Okay, so what is the difference between the radical innovation and incremental innovation? Under the radical innovation, whatever is coming is totally new. Okay, whatever is there in the market, जो भी introduce किया जा रहा है market में, that is totally new. But under the incremental innovation, जो पहले introduction किया गया था, which was very new, जब हम उसी अपना इनिशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज में कुछ चेंजेस करते हैं, वी ऐड ऑन सम फीचर्स, अगर हम परफॉर्मेंस को बेटर करें, अगर हम उसके सेफ्टी फीचर्स को इंक्रीज कर देते हैं, वी वर्क ऑन द एस्थेटिक्स और समथिंग एल्स, सो दैट कम्स अंडर द इंक्रीमेंटल इनोवेशन. ओके, one thing that we need to remember here is that under the incremental innovation, there is no change in the existing technological system and there is no change in the functionality of the product or service, right. What was there under the radical innovation? Radical innovation में जो system और जो functionality को introduce किया गया, incremental innovation में हम वो system और वो functionality को change नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम वो सिस्टम और उस फंक्शनैलिटी को एज इट इज़ रखते हुए जब कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करते हैं, वी वर्क ऑन द परफॉर्मेंस, वी वर्क ऑन द फीचर्स, वी वर्क ऑन द सेफ्टी. ओके, सो दैट इज known as the incremental innovation. Okay, so the example of radical innovation is steam engine. So steam engine जब introduce हुए थे, so वो radical innovation में आएगा क्योंकि सबसे पहले steam engine को introduce किया गया. तो जब सबसे पहले technology को introduce किया गया, सबसे पहले किसी product या service को introduce किया गया with a new functionality, with a new system, so that is radical innovation. तो introduction of steam engine comes under the radical innovation, whereas the the addition of governor on a steam engine is the example of incremental innovation. Steam engine के basic functionality में change नहीं हुआ, but कुछ और extra features को add on कर दिया गया. Next अगर हम बात करें next gen tech innovation की, next generation tech innovation. Okay, so what is that? Next generation the tech innovation, the technology innovation, change in the existing technology system that doesn't alter the functionality but dramatically improves the performance, features, etc. So there is a different कि हम existing technological system में थोड़ा सा change करेंगे, existing technological system में change करके हम अपने product की performance को और features को introduce को और better करेंगे, उनको enhance करेंगे, ठीक है. तो incremental innovation से somewhat this is somewhat related to the incremental innovation कि incremental innovation का next part क्या है, next gen tech innovation. Okay, but one thing we need to remember, there is one
one thing that is constant in in this process, that is there is no change in the basic functionality of the product or the service. ठीक है, without changing the basic functionality of the product or service, we have to increase, we have to improve the features and the performance of the product or the service. So the example of next generation tech innovation is substitution of jet propulsion for propellers on airplanes. ठीक है, तो जो बेसिक फंक्शनैलिटी था एयरप्लेन्स का उसको चेंज नहीं किया गया, बट जो आपका परफॉर्मेंस था उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया फीचर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है कि सब्सटीट्यूशन कर दिया गया, ठीक है, जेट प्रोपल्शंस का. सो यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए. ठीक है, बेसिकली आप एक चीज़ यहाँ पे लाइक वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन टेक इनोवेशन होता है, सो देयर इज़ वास्ट चेंज एंड वास्ट अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द इंक्रीमेंटल इनोवेशन. रेडिकल इनोवेशन से जब इंक्रीमेंटल इनोवेशन में शिफ्ट होता है तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशंस नहीं होते हैं. बट व्हेन देयर इज शिफ्ट फ्रॉम इंक्रीमेंटल इनोवेशन टू नेक्स्ट जेन टेक इनोवेशन, सो देयर इज वास्ट चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड देयर इज वास्ट अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी. ओके, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इनोवेशन अकॉर्डिंग टू द विलियम एंड जेम्स. लास्ट जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, इट वॉज अकॉर्डिंग टू द बेंट्स, and next type of innovation is according to the William and James. Here the innovation is classified into the two categories, that is product innovation and the process innovation. Okay, so product innovation is what? Improving the performance and the safety of product is product innovation. And when we talk about the process innovation, so this is improving production process to make the product cheaper and with a better production quality. This is process innovation. Okay, so जब भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस को और इम्प्रूव करते हैं अपने प्रोडक्ट को चीपर बनाने के लिए, सी यू हैव टू रिमेंबर दैट हियर द प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गेटिंग डाउन. ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है और प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज प्रोसेस इनोवेशन. सो इन जनरल सेंस इट इज नॉट समथिंग दैट वन कैन अंडरस्टैंड ईजिली. सो ऐसा जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करेंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, अपने प्रोसेस को चेंज करते हैं, अपडेटेड मशीनरीज लाते हैं, मशीनरी में चेंज करते हैं, तो वो हमारे कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा. बट नो, प्रोसेस इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें प्रोसेस को यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोसेस इनोवेशन का मतलब है जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो, यू आर इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड यू आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ये कैसे पॉसिबल है? इनिशिएशन जब आप इनिशियल स्टेज पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप कंटिन्यूसली जब आप किसी प्रोसेस में काम कर रहे हैं, यू आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग अ प्रोसेस, सो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर हो जाती है, सुपीरियर हो जाती है और आपका जो कॉस्ट है वो डाउन हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, सो मेजर डिफ्रेंसिएशन क्या है प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन में, कि प्रोडक्ट इनोवेशन में हम केवल सेफ्टी और परफॉर्मेंस पे और फीचर्स पे काम कर रहे हैं, और प्रोसेस इनोवेशन में हम अपने टेक्नोलॉजी पे अपना जो बेसिक ऑपरेशन है, हम अपने बेसिक ऑपरेशंस को इस तरह पे काम कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहे हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल चेंज. Under the technological change, there are two terms, the technological leadership and the technological followership. Okay, so first of all, let's talk about the technological leadership. Technological leadership is what? When industry leaders are those companies which maintain their competitive positions through early development and applications of new technology. Industry leaders कौन है? जो कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं और कि क्या चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, लाइक हु टेक्स द प्रोएक्टिव एक्शन.
वो बिजनेस फर्म्स जो कि प्रोएक्टिव एक्शन ले रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर रही हैं और टाइमली अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, अपने प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनको, इन्हें हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप. लाइक इन सम वॉट इन सम सेंस वी कैन से दैट दे आर टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज आर इन द टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी में अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही है कंपनी कोई, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल लीडर. ओके, सो a firm seeks to be the first to introduce technological changes that support its generic strategy. Leadership can be established in technologies employed in any value activity. So, however, the technology leadership imposes cost and risk to the organizations which aspire for maintaining technological superiority or the leadership. See, technological leadership के साथ में when a business is taking the first mover advantage, so it has number of the positive aspect, right? With the with the first mover advantage, the profit of the company will increase. जो customer base है आपके competitors का customer base वो shift होगा, your customer base will increase, your profit will increase, sales will increase, and the ultimately we can say कि जो financial outcomes है किसी भी organization के, the financial outcomes may increase or change in a positive way, right? So, this is way in which the technological leadership helps a company to be the leader in all over the industry. Now, we have some organizations who are called as a technological followership. लीडरशिप को हमने देखा कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं, सबसे पहले प्रोएक्टिव एक्शन लेके टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, दे आर नोन एज द टेक्नोलॉजी लीडरशिप. ओके, टेक्नोलॉजिकल लीडर्स इन द मार्केट. अगर हम फॉलोवरशिप की बात करें, सो टेक्नोलॉजिकल फॉलोवरशिप बेसिकली रेफर्स टू अ कॉन्शियस एंड एक्टिव स्ट्रैटेजी in which a firm chooses not to be the first on the innovations but to follow the innovations, right? As the followership word is very common and it is pretty clear with the term only. Okay, कि टेक्नोलॉजिकल फॉलोवरशिप, अगर कोई फर्म टेक्नोलॉजिकल फॉलोवरशिप पे बिलीव कर रही है तो इट मीन्स वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले रही है. कोई फर्म XYZ ने पहले कोई नया इनोवेशन किया, कुछ नया टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ में जो दूसरी फर्म्स हैं पीछे से उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को मार्केट को लाया गया, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या पूरा प्रोसीडिंग रहा और उसको फॉलो किया. ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल फॉलोवर्स. लाइक अ मैनेजर्स डिसीजन और व्हाट टू अडॉप्ट, like when to adopt the new technology also depends on the potential benefit of the new technology as well as the organization's technology skills. Following the technology leader can save development expenses. सी, जो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप लेगा जो फर्म, उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने के साथ साथ ही एक रिस्क भी रहता है कि अगर आपका टेक्नोलॉजी फेल हो गया, व्हाट इफ़ योर टेक्नोलॉजी फेल्स और व्हाट इफ़ योर इनोवेशन फेल्स, तो फर्म को वो फेल्योर का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? दैट फर्म विच हैज़ टेकन दिस स्टेप. ओके, तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि जो भी कॉस्ट है आपका वो ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना पड़ेगा. जो अगर फेल होता है टेक्नोलॉजी का, प्लस कस्टमर को अगर आपको अवेयरनेस देना है, आपने न्यू टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तो कस्टमर को अवेयरनेस देना पड़ेगा कि ये न्यू टेक्नोलॉजी हम लेकर आए हैं. जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो अवेयरनेस देनी पड़ती है कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसका नीड जनरेट करना पड़ता है. तो वही सेम प्रोसेस होगा जब न्यू कोई भी फर्म टेक्नोलॉजी लीडरशिप का टेक्नोलॉजी लीडरशिप को चूज़ करता है, तो वो सारा जो कॉस्ट है वो फर्म के साथ में एसोसिएटेड है और सारा रिस्क भी उस फर्म के साथ में एसोसिएटेड है. ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के बाद में जो टेक्नोलॉजिकल फॉलोअर्स होते हैं, दे कैन सिंपली एनालाइज दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन. फर्म ने जो डिसीजन लिया, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट थे एंड व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट, तो पूरा इंस्पेक्शन करके, पूरा एनालिसिस करके जो टेक्नोलॉजिकल फॉलोअर्स हैं, दे कैन ईजिली टेक द डिसीजन कि किस टाइम पे उनको ये टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडेप्ट करना है. ओके, so next is advantages and disadvantages of the technological leadership. If we see the side of advantage, so the first mover advantage is the advantage
इज देयर कि जो भी कंपनी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को अडॉप्ट करेगी इट विल हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. देयर इज नेक्स्ट इज लिटिल और नो कंपटीशन. जब कोई भी फर्म कोई नया टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में, सो देयर विल बी नो कंपटीशन बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट वन इन द मार्केट, राइट. Next is greater efficiency. It will have the greater efficiency. There will be higher profit margins. Obviously अगर आपकी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया गया मार्केट में, आपकी कंज्यूमर बेस प्रिपेयर हो गया, कस्टमर बेस प्रिपेयर हो गया, सो इन दैट वे योर सेल विल इंक्रीज एंड योर प्रॉफिट मार्जिन्स विल गो हायर. Next is sustainable advantage. That advantage will sustain for a longer period of time if you take the first mover advantage in the technological leadership. Next is reputation for innovation. You will get the reputation for innovation under the technological leadership. Okay, so if we talk about the disadvantages, so there is greater risk, like if the change or the innovation fails, if the technology fails, तो जो भी cost आएगा, failure का cost, the firm the firm or the business have to bear that cost. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने का जो भी कॉस्ट है दैट फर्म हैज़ टू बियर. लाइक इमिटेशन इज मोर ईजी बट इनोवेशन इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लर्निंग एंड एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स. You have to go through the trial and error method, and if you are opting for the technological leadership, you have to go through the trial and error method, right. You will have to learn from your mistakes, you will have to eliminate all the defects. So cost of learning is going to be the firm have to bear this cost of learning. Next is the cost of customer education. तो कस्टमर के एजुकेशन का जो कॉस्ट है when you are introducing something for the first time in the market, so the company have to bear the cost of customer education as well. Okay, so then the next is source of technological dynamics. Okay, so technological dynamics means जितने भी चेंजेस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है करेंटली, वी आर गेटिंग ग्लोबल एंड हम सारे ही कंट्रीज़ से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को ले रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजिकल जो डायनेमिक्स एक क्रिएट हो रहा है, ये बहुत सारे सोर्सेस हैं इसके. टेक्नोलॉजिकल डायनेमिक्स के सोर्स की अगर हम बात करें, सो द वेरी फर्स्ट इज इनोवेटिव ड्राइव ऑफ द कंपनी. इफ़ अ कंपनी बिलीव्स ऑन द इनोवेशन कि मुझे कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, वी हैव टू बी द टेक्नोलॉजिकल लीडर. If there is a sense of being technological leader in the organization, so that is a source of technological dynamics. Next is consumer need and expectation. The change in the customer needs and expectations work as a source for technological dynamics because people are getting global nowadays. We have the global customers, right? They have the access to social media, internet, mobile phones and the upgraded technology, so their expectations are also getting high. Next is demand conditions. So the demand conditions, if there is high demand for the new technology or the upgraded or the next technology, so a business also have to change its operational strategy and have to introduce the new technology in the market. So the demand conditions also work as a source for the technological dynamics. Next is suppliers offering. So the offerings of supplier, whatever your supplier is offering works as a source of technological dynamics. In what sense? Like आपके प्रोडक्ट को बनाने का जो भी रॉ मटेरियल था, अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी में चेंज हो रहा है, जो रॉ मटेरियल का जो भी प्रोसेस है, जिस तरह से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स में जो भी मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके सप्लायर ने टेक्नोलॉजी में चेंज किया तो क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल आप अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस होंगे. जो टेक्नोलॉजी आप पहले यूज़ कर लेते थे अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, हो सकता है कि आपका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से आप उस मटेरियल को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पा रहे हो, राइट. सो आपका जो मटेरियल आ रहा है, सप्लायर से जो ऑफरिंग्स आ रही हैं, अगर उनमें चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट में भी अपग्रेडेशन करना होगा. Next is social forces and the government policies. So social forces are also responsible, are the larger source for the social the technological dynamics.
एंड इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह से हमें हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं. लाइक इन टुडेज सिनेरियो हमें we have to file the GST, we have to prepare bills and all. So अभी क्या टेक्नोलॉजिकल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का एंड डायनेमिक्स का. अर्लियर वी यूज टू गो फॉर द शॉपिंग और हमें कोई भी प्लेन पेपर पे कोई हमें एक बिल बनाकर दे दिया जाता था. बट नाउ इन द करेंट सिनेरियो every business has to file the GST, और जितने भी आपके merchants हैं even they are also making the bills by using their GST number and all these things. तो technology में change हुआ with the introduction of the cashless economy. Today we are having the facility for of payment with the Paytm, Google Pay and all these apps जिनके थ्रू हम अब डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. सो ये जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज है, गवर्नमेंट पॉलिसी ये थी कि हमें डिजिटल इंडिया में लाना है, वी हैव टू मेक अ डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी. सो दैट इज एक्चुअली चेंजिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ बिजनेस एज वेल. Okay, so the next of impact of technology on globalization. There are these impacts can be categorized into three categories: economic impact, social impact and the environmental impact. Under the economic impact, there is improved standard of living, increase in the competition among the nations, widening the income gap between the rich and poor. Okay. And if we talk about the social impact, so there is increased awareness of the foreign culture and there is loss of the local culture as well. As foreign culture is increasing, the world is becoming a global economy, a single economy. So foreign culture increase हो रहा है, but local culture is somewhat we are losing our local culture. Under the environmental impact, the environmental degradation and the environmental management has also become a big task today. Okay, so the last topic is technology gap. If the technology gap theory is a model given by the Ponsor in 1961, describes an advantage enjoyed by the country that introduces goods in the markets. There are two terms, one is demand lag and another is initiation lag. Demand lag is what? Demand lag basically refers to the time it takes from creating a new product up to when it is accepted locally. At this point, exports are equal to 0 and there is test marketing as well as product activation. And this lag also reaches up to a point when the importing countries slowly accept the newly developed products due to lack of the awareness. And if you talk about the imitation lag, so imitation lag refers to the time when the product is now fully accepted by the importing countries and there will be a rise in export, hence producers the producers in the importing country will start imitating the new product, and this process length depends on the innovativeness and the amount of R&D importing country spends on the developing of the product. Okay, so this was all about the technological environment. Thank you.